Workload या load. This is a term which is quite commonly used in the domain of modeling and simulation. What is load? Load typically represents the number of events which are offered to the system for execution. यानी एक सिस्टम के अंदर एक सर्वर के पास इवेंट्स की फॉर्म में लोग आए, अब उन्होंने उनको सर्विस करना है. लेट्स टेक अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ बैंक. अ क्लाइंट कम्स इन, द टेलर, the person clicks on a button and receives a chit with a number, then goes in the waiting queue. When the time comes, a particular number comes. So suppose his number was 225. So when 225 comes, the person who goes, walks to the teller's window and then asks the specific questions. Okay, this is a check, please cash it. Or this is some money, please put in my account, whatever the case. So this is the workload of that teller. Can it handle one or more events at the same time? So इसके थ्रू अरेंज की जाती हैं रिक्वेस्ट. पहले अरेंज होती हैं एंड देन परफॉर्म हो जाती हैं सिस्टम. इनकी ड्यूरेशन जो होती है वो एंडलेस भी हो सकती है, और लोड जो होता है वो री एंटर भी कर सकता है अगर वो पिछली दफ़ा कंप्लीट नहीं हुआ. सो लेट्स सपोज आप डिग्री वेरिफिकेशन के लिए HEC के पास गए और वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, देन यू हैव टू री एंटर द सिस्टम टू डू इट ओवर अगेन. तो एक टिपिकल एग्जांपल जो हमारे पास है वो है डेटाबेस कम्युनिटी की, क्योंकि उन्होंने वर्कलोड को ट्रांजैक्शंस की फॉर्म में बताया कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक वर्कलोड है. So here we have looked at the concept of workloads or load and seen how it is important in the modeling and simulation area.